Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Nama Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa taruvesya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatamaham Bande Shri Guru Dinatarinam Shri Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Hare Krishna. I welcome all of you to our Ekadashi class. Prabhuji, am I available? Should I do or Shantanu Prabhu? I don't know, both of you decide who will do. Shantanu Prabhu is not able to unmute. He's showing his signs. We have to make him co-host. Yeah. Now I think he can. Hare Krishna Prabhu. I will translate. Yes. You are always welcome. So, I said I welcome all of you to today's Ekadashi class. तो मैं आप सभी का आज के एकादशी कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ. I welcome Shantanu Prabhu also to today's class. मैं भक्त शांतनु का भी स्वागत करता हूँ आज की कक्षा में. Gaur Purnima is just this month on 25th of this month. So I thought that this Ekadashi and the next Ekadashi, we would discuss something about Sri Chaitanya Mahaprabhu. इस महीने की 25 तारीख को गौर पूर्णिमा का उत्सव हम मनाएंगे. तो मैंने ये विचार किया कि इस एकादशी और अगली एकादशी में भी हम श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में चर्चा करें. Though the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu are oceanic, but we will discuss some pastimes and try to see how we can apply in our life. अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो एक सागर के समान है, परंतु हम ये प्रयत्न करेंगे कि उस सागर समान लीलाओं से कुछ बूंदे जो हैं उनके गुणों की उसका गुणगान कर सकें. Of all the gifts that we have received in Krishna consciousness, the greatest gift that Sri Chaitanya Mahaprabhu brought and gave to all of us is the gift of holy name. कृष्ण भावनामृत में जितने भी उपहार हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्राप्त हुए हैं, उनमें सर्वोपरि जो प्रमुख उपहार है वो है हरिनाम का उपहार. And I suppose this is the toughest activity that we all of us agree that we do in ISKCON. और मेरा ये विचार है और आप सब भी इससे सहमत होंगे, ये जो हरिनाम का जो कार्य है ये सबसे कठिन कार्य है जो ISKCON के भक्तवृंदों को करना पड़ता है. It's very easy to give class.
It's very easy to hear a class. It's very easy to take prasadam. It's very easy to distribute prasadam. It's so difficult to chant Hare Krishna. कथा की व्याख्या करना सरल है, कथा का श्रवण करना भी काफी सरल है, प्रसाद वितरण भी एक सरल कार्य है, परंतु भगवान का नाम लेना बहुत ही कठिन लगता है. Every day chanting so many rounds of Hare Krishna, sometimes we wonder, is it really a gift of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the holy name, because he said that Hari Nam Pravartak. He actually came to establish the Yuga Dharma of chanting the holy name. तो प्रतिदिन हमें नियमानुसार भगवान के नाम लेने पड़ते हैं, संख्या पूर्वक नाम लेना पड़ता है, परंतु कभी हमारे मन में भी ये विचार आ सकता है कि सच में क्या ये हरिनाम जो श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं युग धर्म के नाम में जिसका प्रचार वो कर रहे हैं इस हरिनाम को, क्या वो सच में एक उपहार है? Sometimes it becomes so burdensome and it looks like as if we are going, it's so tough to chant the Hare Krishna and complete the commitments. तो कभी कभी हमें यह व्यतीत होता है कि ये हरिनाम एक बोझ के समान है और बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है किसी तरह हमारे जो संख्या पूर्वक जो नाम है उनको पूरा करने के. All of you are great souls, so all of you don't find irrelevant what I am saying, but for fallen souls like me, it becomes so tough to chant Hare Krishna with attention and devotion. आप सब तो कई बहुत ही महात्मा स्त्री और पुरुष हैं, आप सबको ये चीज का तात्पर्य नहीं समझ आता होगा, परंतु मुझ जैसे अधम जीव को यह समझ आता है कि ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेना कितना कठिन. Somehow during chanting, all the important things that we can think and we cannot think throughout the day, everything comes to our mind. पता नहीं किस तरह किस कारणवश ऐसा होता है, परंतु भगवान का नाम लेते समय जप करते समय ही सभी महत्वपूर्ण कार्य जो हम विचार कर सकते हैं और जिनके विचार नहीं भी कर सकते हैं वो एकाएक हमारे मन में प्रवेश करते हैं. And we can think everything and do everything else during chanting other than actually hearing the holy name. और हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ करने के लिए सक्षम है, सब कुछ सोचने के लिए सक्षम है जप करते समय, केवल भगवान के नाम का जप करने के अलावा. Sometimes I think if someone is proud of his achievements in life, I can give him a challenge. You sit in one room, we will give you prasadam for 7 days and just chant Hare Krishna throughout. Let's see how great you are. तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ही गर्वित है कि उसने बहुत कुछ प्राप्त किया है जीवन में, बहुत सक्सेसफुल है, तो सोचते हैं कि उसे ऐसी चुनौती दी जाए कि आप एक रूम में बैठिए 7 दिन, आपको सब सुविधाएं दी जाएंगी प्रसाद की, रहने की, आप केवल बैठ के भगवान का नाम नित्य लेके 7 दिन दिखाएं. And I'm sure he will utterly fail in that activity. और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इस चुनौती में वो जरूर परास्त होगा. He might have built big business empires in this world. He might have achieved great academic achievements, all those things. But when it comes to chanting of holy name of the Lord, we sometimes fail so bitterly in just chanting this simple. It looks so simple and ordinary, but it becomes so difficult for our mind to actually concentrate. तो ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति भौतिक स्तर पे और अलग-अलग तरीकों से उसने बहुत कुछ जीवन में प्राप्त किया हो, बहुत ही सक्सेसफुल रहा हो, परंतु ये जो एक सरल और सामान्य एक प्रक्रिया है भगवान के नामों का उच्चारण करने की और उसको सुनने की, ऐसा लगता है मानो कि हम बहुत बुरी तरह से परास्त हो रहे हैं और ये सरल कार्य भी नहीं कर पा.
I remember in 2005, something around 19 years before, when devotees were coming to my room, they were so happy that I am from Jagannath Puri and I am so devotional and all those things they came to know and they were really happy. तो मुझे याद है आज से लगभग 19 वर्ष पूर्व 2005 में जब भक्तगण आते थे मेरे कमरे में मुझसे मिलने हॉस्टल में, तो कितने आनंदित होते थे मुझसे मिलकर, क्योंकि वह सोचते थे कि मैं जगन्नाथपुरी से हूँ, एक बहुत ही धार्मिक छात्र छात्र And I used to tell that I am chanting Gayatri Mantra, I am chanting Hanuman Chalisa, I am chanting this and that. And then they said, you chant Hare Krishna. I said, yes, I will chant Hare Krishna one round. तो मैं उन्हें बताता था कि किस तरह मैं पहले से ही हनुमान जी का जप करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, गायत्री मंत्र करता हूँ। तो भक्त बड़े प्रसन्नित हुए और उन्होंने कहा कि आप हरे कृष्ण मंत्र भी जप कीजिए। और मैंने भी आनंद से कहा, जरूर मैं एक माला जप करूंगा हरे कृष्ण। And then devotees, after 2-3 months, they said, Ki Prabhu, you are just chanting one round. Why don't you chant 2 rounds of Hare Krishna? This is the best gift that you can give in your birthday to Krishna. My birthday came in November. कुछ महीनों बाद जब मेरा जन्मदिन आने लगा तो भक्तों ने कहा, प्रभु जी आप इतने दिन से एक माला कर रहे हैं, क्यों ना आप अब 2 माला करें और ये सबसे सुंदर जो है उपहार होगा भगवान के लिए आपके तरफ। And I remember how tough was it, the decision to chant 2 rounds of Hare Krishna every day. How tough it was that time. मुझे अभी भी स्मरण है कि कितना मुश्किल था वो निश्चय करना मेरे लिए कि अब से मैं 2 माला जप करूं। Whole night I was thinking, will I be able to chant 2 rounds of Hare Krishna? तो पूरी रात्रि मैं इसी विचार में मेरा बीत गया कि क्या मैं भगवान के नाम ये 2 माला कर पाऊंगा क्या? So why is that it becomes so tough to chant Hare Krishna? तो क्या है इसका कारण कि यह भगवान के सरल नाम, दिव्य नाम हरे कृष्ण जप करना इतना कठिन? It is actually the greatest gift that Sri Chaitanya Mahaprabhu has given us. वस्तुतः ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उच्चतम उपहार है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया। Then why we do not have any attraction for the holy name? तो फिर क्यों हमें इस भगवान के दिव्य हरिनाम के प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं होता? One devotee was asking me in the Bhagavatam class that why is it that we have so many fixed number of rounds that we have to chant, this quantity, 4 rounds, 8 rounds, 16 rounds. Why we can chant whatever we can chant with quality? एक व्यक्ति ने मुझसे भागवत कक्षा में यह प्रश्न किया कि क्यों हमें इस तरह संख्या पूर्वक नाम लेने की जरूरत है, फिक्स्ड नंबर कमिटमेंट के साथ 4 माला 8 माला, क्यों मैं हृदय से जप नहीं कर सकता कि जितना भी मेरे को अच्छे से मैं कर पाऊं क्वालिटी से उतना? Why so many fixed number of rounds? Any round I can chant with quality. Is it not enough? तो इस तरह संख्या पूर्वक नाम, संकल्प लेकर नाम इस तरह मैं क्यों करूं? मैं क्यों ना क्वालिटी पे फोकस करके जितना हृदय से आए बस उतना नाम दूं? I said to him that if we are chanting with quality, the proof that we are chanting the holy names with quality is that we will not be able to stop chanting. तो मैंने उस भक्त को उत्तर दिया कि अगर आप चाहते हैं यह प्रूफ कि आप सच में हृदय पूर्वक मन लगाकर क्वालिटी से भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उसका प्रूफ यही है कि आप भगवान का नाम लेना बंद नहीं कर पाएंगे, निरंतर लेना है। Your kids, your wife, your husband, they will come and shake you up. Get up from chanting, and still you will not be able to get up from chanting the holy names of the Lord. तो प्रमाण ये है कि आपके परिवारजन, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आके आपको उन्हें कहना होगा, कह रहे उठिए, कुछ करिए, जाइए, परंतु आप भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ पाए। And in that stage, we do not have to even count the mantras because we get accustomed to just chant throughout the day.
उस तरह के स्तर पर अगर हम जप करते हैं तो हमें कोई संख्या पूर्वक, कोई संकल्पबद्ध होकर नाम लेने की जरूरत नहीं है, या क्योंकि हम निरंतर पूरा दिन रात भगवान के नामों में ही लगे। But because we are beginners, just like beginners, kindergarten students, they are given assignments by the teachers. Write 7 pages of handwriting today. तो क्योंकि हम सब आरंभिक भक्त हैं और हमारी भक्ति भी आरंभ में ही अभी है, तो जिस तरह एक टीचर एक नए बच्चे को कहता है, उसे नियमांकन देता है कि आपको इस तरह 7 पृष्ठ जो है हैंडराइटिंग के आज प्रैक्टिस कर। So exactly in the same way, Srila Prabhupada, our divine teacher, has instructed us to chant every day 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra minimum. तो उसी तरह हमारे जो परम आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, एक शिक्षक की तरह उन्होंने हमें यह नियम दिया है कि हम संकल्पबद्ध होकर प्रैक्टिस करें हर दिन 16 माला जप कर। But so long we do not chant these mantras with devotion, we will never be able to realize this gift of Lord Chaitanya in our life. परंतु जब तक हम इस भगवान के नामों को हृदय पूर्वक, भाव पूर्वक इनका उच्चारण नहीं करते हैं, तब तक हम कभी यह तथ्य नहीं समझ पाएंगे कि कैसे यह हरिनाम हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है श्री चैतन्य महाप्रभु। So today, in the next half an hour, we will end at 8 o'clock because I have another meeting. We will see how to chant with devotion, because this is the greatest gift that we can give to Lord Chaitanya in his birthday on 25th. भी हम अगले आधे घंटे इस तथ्य पे चर्चा करेंगे कि किस तरह हम भगवान का नाम जो है हरिनाम वो भाव पूर्वक, भक्ति पूर्वक ले सकते हैं, क्योंकि यही वह सबसे बड़ा उपहार है जो हम श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके आविर्भाव तिथि पर दे सकते हैं। You can come and do so many services to Lord Chaitanya, practical services. You can give some donations. These are all important. But what is most pleasing to Lord Chaitanya is this gift of chanting Hare Krishna with attention and devotion. तो श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए आप यहाँ मंदिर में आकर कई तरह की सेवाएं कर सकते हैं, आर्थिक रूप से कुछ दान धर्म कर सकते हैं, परंतु तथ्य तो ये है कि ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें ये उपहार दिया है, इसी उपहार को, हरिनाम को अगर हम ध्यान पूर्वक, भाव पूर्वक करें तो यह उपहार उनके जन्मदिन के लिए सबसे सुंदर उपहार है। The first principle is to realize the great fortune to chant Hare Krishna. तो पहला सिद्धांत ये है कि हम अपने परम भाग्य के बारे में चिंतन करें कि हमें भगवान के दिव्य नामों को उच्चारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। No ordinary person can chant Hare Krishna. कोई भी साधारण व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार भगवान के नामों का उच्चारण नहीं कर सकता। It's either that your qualifications have been given by your guru, because of which you are chanting Hare Krishna, or you have earned those qualifications by some amount of service to devotees in your previous life. That's why you are getting an opportunity to come in touch with Hare Krishna. तो इस भगवान के नामों को, हरे कृष्ण महामंत्र को करने का जो परम सौभाग्य है, वह दो कारणों से एक व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। या तो उसे गुरु की, किसी आचार्य की परम कृपा प्राप्त हुई हो जिससे उसे वह प्राप्तता मिले कि वो हरे कृष्ण जप कर सके, या फिर पिछले कई जन्मों में उसने भक्तों की किसी प्रकार सेवा की होगी जिससे उसे यह परम सौभाग्य प्राप्त। How many people are chanting Hare Krishna? Krishna says in Bhagavad Gita, Manushyanam sahasresu kaschid yatati siddhaye. Out of millions and billions and crores of human beings in this earth, some few souls are chanting Hare Krishna.
तो आप देखिए, चिंता कीजिए कि कितने लोग हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं। भगवान गीता में बताते हैं कि हजारों हजारों करोड़ों मनुष्यों में से कुछ अल्पसंख्य ऐसे भाग्यवान मनुष्य हैं जो भगवान का नाम ले पा रहे हैं। You cannot come to devotional service and chant Hare Krishna by your own prowess. तो ऐसा संभव नहीं है कि आप स्वयं अपने प्रयास से, अपनी इच्छा से भक्ति में आ गए और भगवान की सेवा में रत हो। So to realize this great fortune of chanting Hare Krishna is the first prayer that we offer to Sri Krishna Chaitanya and the Panchatattva before chanting the Hare Krishna. तो ये जो साक्षात्कार है कि मैं कितना बड़ा सौभाग्य हूँ, मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे ये हरिनाम करने का मौका मिला है, ये प्रार्थना पूर्वक इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु को नमन करना ही पहला सिद्धांत। Please understand this fact that Hare Krishna is no ordinary sound vibration. It is actually coming from Golok Vrindavan. When all of you will reach Golok Vrindavan, the only music that permeates Golok Vrindavan is Hare Krishna. हम सबको ये समझना चाहिए कि ये जो हरे कृष्ण मंत्र की जो ध्वनि है, ये कोई साधारण भौतिक ध्वनि नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत की गोलोक वृंदावन की नित्य ध्वनि है। जब आप सब अगर भगवान की कृपा से गोलोक धाम में प्रवेश करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां जो नित्य रूप से एक ही ध्वनि हर जगह सुनाई देती है, वो है हरे कृष्ण। So when we sit for chanting Hare Krishna in the morning, if we just take few minutes folding our hands with devotion, thanking Lord Sri Chaitanya, thanking Nityananda, thanking the Panchatattva, thanking Srila Prabhupada, thanking our Guru for giving us the opportunity to chant Hare Krishna. तो इस तरह हम जब भी सुबह भगवान का नामों को उच्चारण करने बैठते हैं तो 2 मिनट निकाल के हमें आभार व्यक्त करना चाहिए श्री चैतन्य महाप्रभु का, श्री नित्यानंद प्रभु का, श्रील प्रभुपाद का, हमारे आचार्य वर्गों का, कि उन्होंने हमें यह परम सौभाग्य प्रदान किया कि हम आज भगवान का नाम उच्चारण कर पाए। I'm actually begging from each one of you. I'm seeing that our Dasosmi family, the number is increasing. The number is increasing. So many new devotees are coming, and the old devotees are also there. But I have a great concern that we all should actually help each other to chant Hare Krishna with devotion and help each other to remind each other the greatest fortune that we have got to chant Hare Krishna together. तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे कालक्रम में हमारे दासोस्मी भक्तवृंद परिवार बढ़ते जा रहा है, कई लोग जुड़ रहे हैं, पुराने भक्त भी हैं, परंतु एक चिंता जो मुझे हमेशा रहती है कि किस तरह भक्त अपने जो हरे कृष्ण मंत्र का जो जप है उसे और भावपूर्वक और भक्ति पूर्वक उसे करें, उसका स्तर बढ़ाएं। और मैं चाहता हूँ कि सभी भक्त परस्पर एक दूसरे की सहायता करें कि वह अपने हरे कृष्ण मंत्र को और अच्छी से और भावपूर्वक कृतज्ञता पूर्वक ले पाए। So this is the first principle to understand what a great fortune I have. I'm chanting Hare Krishna. In the entire spectrum of my eternal existence, the demigods are looking from down. Oh, Sri Nitai is chanting Hare Krishna. I don't believe that. तो सबसे पहला सिद्धांत ये है कि हम अपना ये परम सौभाग्य समझें कि जब से हमें इस भौतिक जगत में हमने प्रवेश किया है, इन करोड़ों अरबों सालों से पहली बार हमें इस तरह के भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करने का मौका मिला है। और देवता गण भी देखकर आश्चर्यचकित है कि यह बद्ध जीव किस तरह आज भगवान का नाम ले पा रहे हैं। The Sri Nitai, who has done so many of sinful activities, sins after sins and sins and sins and sins,
he's got initiated into Brahma Matva Gaudiya Sampradaya and he's chanting Hare Krishna. I don't believe this. तो जब देवतागण ये देखते हैं, ये सुनते हैं कि ये पतित जीव है, ये तो बद्ध जीव है जो सालों से इतने पापमय कार्य में रत था, पूरी तरह बद्ध था, और ये अब भगवान के दिव्य नाम, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, ब्रह्म मध्य संप्रदाय में इसने दीक्षा प्राप्त की है, हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ। And that is how chanting Hare Krishna is the greatest fortune that we have received. But we can only realize this fortune when we have a humble heart to understand that how I am completely unqualified to receive the fortune of chanting Hare Krishna. तो तथ्य तो ये है कि जो हरिनाम का जो उपहार है, ये सबसे बड़ा उपहार है जो बहुत ही परम सौभाग्य से हमें मिला है, परंतु ये सौभाग्य का जो साक्षात्कार है वो हमारे हृदय में तभी हो सकता है जब हम विनम्रता पूर्वक यह जाने और समझें कि इस उपहार के लिए, इस परम सौभाग्य के लिए मेरी कोई पात्रता नहीं है। And when we have that humility, we can actually realize that actually I am not qualified and I have got this as a mercy from Guru. And then while remembering that fortune, when we chant that holy name, those holy names will actually please Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो इस तरह की विनम्रता अगर हमारे हृदय में हो कि मेरी तो कोई भी पात्रता नहीं है, फिर भी भगवान की कृपा से, गुरुवर्गों की कृपा से मुझे ये परम सौभाग्य मिला है, परम उपहार मिला है हरिनाम का, और इस विनम्रता से अगर हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं तो इससे श्री चैतन्य महाप्रभु परम आनंदित होते हैं। The second principle to actually chant with devotion is to continuously remind ourselves of this fortune by regularly hearing the glories of the holy name. तो दूसरा सिद्धांत जो है वो यह है कि हम निरंतर स्वयं को यह स्मरण कराते रहें कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है इस हरिनाम को प्राप्त करने का, उच्चारण करने का, और यह हम कर सकते हैं नित्य रूप से बार बार हरिनाम की महिमाओं का श्रवण करते। We can try our level best to concentrate on hearing the holy name nicely, but if we develop a connection with Krishna, with Sri Chaitanya Mahaprabhu, then we can easily chant the Hare Krishna Mahamantra. हम बाह्य तरीके से इतना भी प्रयास करें, स्वयं का प्रयास करें कि मन और बुद्धि को भगवान के नामों में लगा पाएं, परंतु तथ्य तो ये है कि हमारी सफलता तभी होगी भगवान के नामों के उच्चारण में अगर हम भगवान से, श्री कृष्ण से, श्री चैतन्य महाप्रभु से एक संपर्क स्थापित कर पाएं। I do not know whether you have any time encountered romantic lovers. तो मुझे यह पता नहीं है कि कितने लोग आप में से हैं जिन्होंने, जिनको साक्षात्कार है कि किस तरह जो प्रेमी जोड़े हैं उनका रिश्ता होता है। In my lifetime of last 35 years, I have encountered some of them. तो मेरा जो जीवन काल है उसमें मैंने कुछ प्रेमी जोड़ों के साक्षात्कारों को सामने से देखा। And when someone falls in love, you do not have to tell him to remember his beloved or her beloved. जब कोई व्यक्ति प्रेम में होता है तो उसे यह ज्ञात नहीं करवाना पड़ता है कि क्या तुम अपने प्रेमी या प्रेमिका का स्मरण कर रहे हो या नहीं। It's just so automatic. It's just so spontaneous. तो यह अपने आप होता है कि वह हमेशा उसका स्मरण उनके हृदय में चलता है। And we see in the scriptures that the process to develop that connection with Krishna so that we can chant Krishna's name is by hearing about Krishna. और शास्त्र बताते हैं कि इस तरह का
संपर्क अगर हमें भगवान के साथ स्थापित करना है कि हम हृदय पूर्वक उनका नाम नित्य रूप से ले सकें, तो वह तरीका जो बताया गया है वह तरीका है भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण करना। We see Rukmini. She was not knowing who is Krishna. She continuously heard about Krishna from Narad Muni, from all the great sages, that Krishna did this, Krishna did that, and she felt such loving attraction. तो अगर हम रुक्मिणी जी को देखें तो उन्हें तो कृष्ण से साक्षात्कार नहीं हुआ था, उनके दर्शन नहीं हुए थे, परंतु उन्होंने कई बार नारद मुनि के मुख से कृष्ण की लीलाएं सुनी थी, उनके गुणों का श्रवण किया था, और इस तरह उनका हृदय कृष्ण में लग गया। So, if we really want to chant Hare Krishna, then we have to prioritize every day to hear something from Guru about Krishna. इस तरह अगर हम चाहते हैं कि जो हम भगवान का नाम हर दिन भक्तिमय रूप से ध्यान पूर्वक लें, तो हमें अपने जीवन में यह सिद्धांत लाना होगा कि हर दिन प्रतिदिन कुछ क्षण हम बिताएं श्री गुरु के मुख से, शास्त्रों के मुख से हरिनाम की महिमा पर। Prahlad Maharaj says, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. तो प्रहलाद महाराज अपनी शिक्षाओं में बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। Kirtanam is chanting, and that chanting, when it is done with devotion, feeling and attention, creates remembrance of Krishna. तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि कीर्तनम, अगर भगवान की कीर्ति का, भगवान के नामों का उच्चारण किया जाता है भक्ति भाव से, ध्यान पूर्वक, तो ऐसा कीर्तन जो है भगवान का स्मरण हमारे हृदय में उत्पन्न करता है। But that kirtanam can be done with devotion only when we regularly do Shravanam. तो ये कीर्तन नित्य रूप से करने के लिए, दृढ़ता से करने के लिए हम तभी कर पाएंगे जब हमने सही जगह से, सही स्रोत से नित्य रूप से श्रवण किया। Every day we must take out time, even if 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, while taking breakfast, while taking lunch or dinner or anything, to hear about Krishna. प्रतिदिन नित्य रूप से, अगर 10 मिनट भी हो तो 10 मिनट ही सही, परंतु अगर हम नित्य रूप से, हमें यह संकल्पबद्ध होना चाहिए कि मैं जरूर कुछ न कुछ कृष्ण के बारे में जरूर श्रवण करूं। And that hearing about Krishna will help us to develop connection with the Lord, and with that we will be able to every day chant the holy names with devotion. तो इस तरह का अगर हम नित्य रूप से भगवान का श्रवण करेंगे, तो इस श्रवण से हम भगवान के साथ एक संपर्क स्थापित कर पाएंगे, और जिसके फलस्वरूप हम भगवान के नामों का उच्चारण ध्यानपूर्वक कर पाएंगे। The third principle is to actually chant with those devotees who chant with connection. तीसरा सिद्धांत ये है कि हम उन भक्तों के सत्संग में भगवान का नाम जप करें जिन्होंने भगवान के साथ हृदय पूर्वक संपर्क स्थापित किया है। In the association of those who chant with devotion and connection, we get encouragement, enthusiasm. Just by seeing them, by chanting with them, we get an enthusiasm. Oh, I should also chant nicely. तो ऐसे भक्तों के संग में आकर ही हमें दृढ़ता मिलती है, हमें उत्साह प्राप्त होता है कि मुझे भी इनकी तरह दृढ़ता पूर्वक, हृदय पूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए। Holy name is the greatest intoxicant in this entire universe. भगवान का नाम जो है वह सभी मदपान में से सबसे उच्चतम मदपान। And the best way to get intoxicated to is to associate with those who always want to remain intoxicated. और सबसे अच्छा तरीका है मदहोश होने का कि हम उन लोग भक्तों के सत्संग करें जो हरि नाम में हमेशा मदहोश हैं। And that is how it's a principle that we need to prioritize to chant with those devotees who really struggle
to connect with Krishna while chanting the holy names. तो ये सिद्धांत हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में ये प्राथमिक प्राथमिक सिद्धांत हो कि हम उन भक्तों के सत्संग में भगवान का नाम जप करें जो ध्यान पूर्वक भाव पूर्वक भगवान का नाम लें। In that association will be inspired. Oh, just see this devotee. He's praying so much while chanting Hare Krishna. Oh, when that day will come that I will also pray to you, Krishna, and chant with devotion. तो ऐसे संग में हमें भी उत्साह प्राप्त होगा, हमें भी प्रेरणा मिलेगी दूसरे भक्तों को देखकर कैसे वह ध्यान पूर्वक प्रार्थना पूर्वक भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, और कब ऐसा दिन आएगा कि मैं भी इस तरह भगवान के नामों का शरण ले पाऊं। Srila Narad Muni is an example in this regard. तो नारद मुनि का उदाहरण हम इस सिद्धांत को समझने के लिए ले सकते हैं। Narad Muni in his previous life was a something like a playboy, तो नारद मुनि heavenly playboy. तो नारद मुनि की कथा में यह आता है कि अपने पूर्व जन्म में नारद मुनि एक he was the playboy is not who plays. A playboy is one who is surrounded by so many ladies and keeps on going and singing and dancing and chit chatting with the ladies and all those things. That's the definition of a playboy. प्लेबॉय को हम एक रंगबाज व्यक्ति की तरह समझ सकते हैं, जिसका चरित्र ऐसा होता है कि वह हमेशा अलग अलग स्त्रियों से घिरा हुआ होता है और उसी में भ्रमण करता है। His name was Upabharana. और उनका नाम उपभरण था। And he was going with so many ladies and going, and one day he went to one place where there were so many sages who were doing a Vishnu Yajna. They were doing some flower holy festival. तो इस तरह एक दिन भ्रमण करते हुए वो ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहाँ बहुत सारे जो साधु संत हैं वह विष्णु यज्ञ कर रहे थे। And there he played Bollywood duets, classic duets of romance. तो वहाँ जाके उनके समक्ष उन्होंने जाकर जो प्रेमी प्रेमिकाओं के गानों का मंचन किया। Actually, the sages were chanting different Vishnu mantras and singing the names, and here is Upavaran with so many ladies coming and started chanting Bollywood songs. Not Bollywood, not Hollywood, the Swarga Oud songs. तो वहाँ के जो सभी साधु संत थे वह विष्णु के नामों का उच्चारण कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, परंतु उनके समक्ष जाकर ये जो है नारद मुनि जो है उपभरण वो जाके अलग अलग दैवीय वाद्य यंत्र और गाना बजाना करने लगे। And then the sages became so upset. They said, "You fool! Don't you know you are such a outcast? How dare you sing all this mundane romance when we are doing Vishnu Yajna?" तो वहाँ के जो साधु थे वो बहुत ही क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा कि तुम क्या मूर्ख हो कि तुम इस तरह के भौतिक रस के गानों को यहाँ पे कर रहे हो जहाँ पे हम शुद्धता से विष्णु यज्ञ कर रहे हैं। And then they cursed Upavaran to come to this earthly planet and be born in the family of an outcast. तो इस क्रोध में उन्होंने उपभरण को श्राप दिया कि तुम मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म होगा एक शूद्र के रूप। And then this small Upavaran is born as a small boy who doesn't even know who is his father. His mother is staying in a school,
and under the shelter of a school teacher. तो इस तरह नारद मुनि का जन्म होता है पृथ्वी लोक में एक शूद्र परिवार में, जिनमें उनके पिताजी कौन है वो पता नहीं होता है, और उनकी माता भी एक पाठशाला में रहती है, एक शिक्षक के अंदर. And one time, some 4 great sannyasis who were completely realized in loving Krishna, serving Krishna, they came and sought shelter from this school headmaster. तो एक बार सौभाग्यवश ऐसा होता है कि 4 महापुरुष जो कि भगवान के परम प्रिय प्रेमी भक्त होते हैं, वो आकर इस पाठशाला के जो प्रधान अध्यापक हैं उनके पास आके आश्रय चाहते हैं. They were actually asking the teacher, school teacher, that can we stay in this 4 months of rainy season somewhere in your village because we cannot travel because there are so many rains. तो उन्होंने यह अपना विचार व्यक्त किया कि ये जो चातुर्मास हैं, जो वर्षा के, क्या आप हमें अनुमति दे सकते हैं कि हम आपके इस गांव में कहीं पे हमें आश्रय मिल सके. The school teacher actually offered a very beautiful cottage for the sages to stay and gave them small Narada boy, till now he is not Narada, small boy as their assistant. तो इस प्रधान अध्यापक ने इन 4 मुनियों को, महापुरुषों को एक बहुत ही सुंदर कुटिया प्रदान की और इस छोटे बालक को भी दिया ताकि वह उनका सहायक सेवक बन जाए. Just imagine this boy who was a playboy and now he has fallen and he is in this despicable condition is now getting the fortune to become assistant for these 4 sannyasis. हम विचार कर सकते हैं इस तरह ये बालक जो पूर्व जन्म में स्वर्ग में अलग अधम रूप से रंगबाज की तरह रंग रलियां कर रहा था, उसका जन्म एक शूद्र परिवार में होता है, उसका जीवन अधम होता है, परंतु किस तरह परम सौभाग्य से उसे इस 4 महापुरुषों की सेवा का अवसर. And every day this boy would go and give some prasadam to them and clean their vessels, clean their dress. And all the while this boy would look at these 4 sannyasis and think, what is that is giving them so much happiness? तो इस तरह सहायक के रूप में ये छोटा बालक इन साधुओं की सेवा करता था, उन्हें प्रसाद देता था, उनके कपड़े धोता था और सभी निम्न सेवाएं करता था, और हमेशा उनके मुखमंडल की ओर देखकर सोचता रहता था कि ऐसा क्या है जो इन्हें इतना चिन्मय सुख प्रदान करता है. They have nothing in their life, they're just roaming, they don't have a place to stay, they don't have any money. How they are so happy, how they are so happily chanting the names of the God. ये महापुरुष किस तरह इस परम आनंद में हमेशा विभोर रहते हैं, न इनके पास रहने का स्थान है, न खाने के लिए कुछ है, इसी तरह यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं, तो कैसे ये इतने आनंद में रह सकते? Just by observing these 4 sannyasis, just by being in their presence of whatever devotional service of chanting and reading and discussing about Krishna they were doing, this boy's inner dormant devotion got awakened. तो केवल मात्र इन महापुरुषों की कार्यकलापों को दर्शन करते हुए, उनके बारे में चिंता करते हुए, इन महापुरुषों के मुख से कथा और भगवान के नामों का श्रवण कर ही इस छोटे बालक के हृदय में भगवान के प्रति that is the secret power that lies behind chanting and doing devotional service in association of those who really struggle to do it nicely.
वह जो गोपनीय, अत्यंत परम गोपनीय तथ्य है कि अगर हम जो भगवान की सेवा है, भगवान का नाम कथा श्रवण है, वो संतो आई मिस्ड कैन रिपीट. I also don't remember what I spoke. I have already told that this year I will live on present. I don't remember the past. So those who are struggling, they can get power by hearing. Those who are not even struggling, they can get power from those who are struggling, and those who are struggling can get power from those who are not struggling. Just in their association. यह रहस्य है भक्ति वर्धन का कि जिसकी इच्छा भी नहीं है भक्ति करने की, उसकी भी इच्छा जागृत हो जाती है उन भक्तों को देखकर, उनसे प्रेरणा लेकर, जो भगवान की सेवा में परिश्रम कर रहे हैं, और जो परिश्रम कर रहे हैं उन्हें प्रेरणा मिलती है और शक्ति मिलती है उन भक्तों को देखकर, उनकी श्रवण कर जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम. So that is how we should make a priority to find out those people who really love Krishna and who make their life's priority to love Krishna, and take it a priority to associate with them, to chant with them, to read with them, to hear about Krishna with them. इस तरह हमें अपने जीवन में प्राथमिकता इस चीज को देनी चाहिए कि मैं सत्संग करूंगा उन भक्तों का जिन्होंने भगवान को प्राथमिकता दी है अपने जीवन में, जो भगवान से प्रेम करते हैं. इस चीज का मैं संकल्प लूंगा. Just by observing the four sannyasis from distance, Narad Muni's torment devotion got awakened. Similarly, if we make it a priority to chant with devotees who really aspire to go to Sri Vrindavan, to really love Krishna, in their association, we actually will get inspired to connect with Krishna with devotion. हम देखते हैं नारद मुनि केवल इन साधुओं के कार्यकलापों को दर्शन करके ही उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया. तो इसी तरह अगर हम भी अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं कि हम उन भक्तों का सत्संग करेंगे, उन भक्तों के साथ भगवान का नाम जप करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में भगवान को, भगवान की सेवा को प्राथमिकता दी है, तो हमारे हृदय में भी भगवान के साथ संपर्क स्थापन होगा. The fourth principle is actually to appreciate and serve those devotees who are engaged in propagating the glories of holy names. और जो चौथा सिद्धांत है वह ये है कि हम उन भक्तों की सेवा करें और उनका गुणगान करें जिन्होंने अपना जीवन समर्पण किया है भगवान की नाम की महिमाओं को प्रचार. There was one person whose name was Devanand Pandit. तो एक भक्त थे, एक व्यक्ति थे, आज से कई साल पूर्व, जिनका नाम था देवानंद पंडित. At the time of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was the biggest Srimad Bhagavatam reciter in entire India. तो श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में ये देवानंद पंडित सबसे प्रसिद्ध भागवत कथाकार थे पूरे भारतवर्ष. If Devanand Pandit would give class now, then I think all the YouTube servers will crash down because so many people would join for his classes. तो आज की तिथि पे अगर देवानंद पंडित प्रभु क्लास देते हैं, कक्षा देते हैं, तो YouTube के सारे सर्वर फेल हो जाएंगे क्योंकि पूरा विश्व उमड़ जाएगा उनसे कथा श्रवण करके. That was the charisma persona of Devanand Pandit, and that was the way, with so much of meter and devotion, not just devotion, with so much of scholarly knowledge, he was reciting Bhagavatam. तो इस तरह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे देवानंद पंडित. इस तरह का गहरा ज्ञान था उन्हें शास्त्रों का देवानंद पंडित को. Recently, I was just 2-3 days before, I was hearing a class by my Gurudev, and he was telling
that Devanand Pandit knew everything about Bhagavatam except the conclusion of Srimad Bhagavatam. तो कुछ दिन पहले मैं अपने गुरु महाराज से श्रवण कर रहा था और उन्होंने यह बताया देवानंद पंडित के उपलक्ष्य में कि देवानंद पंडित को भागवत के बारे में सब कुछ पता था, केवल भागवत का सार नहीं पता। The entire Srimad Bhagavatam is made to actually help everyone to love Krishna, to chant Hare Krishna. He was to do everything about Bhagavatam, tell everything about Bhagavatam except telling the devotion to Krishna. तो श्रीमद् भागवत का परम उद्देश्य यही है कि भगवान के प्रति भक्ति हमारे हृदय में आए, भगवान का नाम हम भक्तिमय तरीके से ले सके। परंतु देवानंद पंडित भागवत के बारे में सब कुछ बताते थे, केवल भागवत का सार जो है, कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो नहीं बताते। One day in one of his classes, Srivas Thakur, who is Narad Muni, actually Narad Muni, after getting the association of these four sannyasis, became Narad Muni, and from the Narad Muni he took birth as Srivas Thakur in this Kali Yuga. तो ये जो नारद मुनि हम अभी सुन रहे थे, ये बालक चार महापुरुषों का सत्संग करके बाद में यह परम भक्त भगवान के नारद मुनि होते हैं और कलयुग में वो श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में श्रीवास ठाकुर के रूप में अवतरित हुए। And this Srivas actually got attracted to hearing Srimad Bhagavatam from Devanand Pandit, and he came to Devanand Pandit's class. तो ये श्रीवास ठाकुर बहुत ही प्रभावित हुए देवानंद पंडित के बारे में सुनकर और वो स्वयं वहां पर आए देवानंद पंडित के भागवत के। Srivas Thakur was dozing, not out of sleep like some of you are, but out of great devotion to Krishna. तो श्रीवास ठाकुर भाव विभोर थे, वह बाह्य रूप से अचेतन हो गए थे, वह सो नहीं रहे थे, परंतु कृष्ण भाव में वह अचेतन हो गए थे भागवत से। And when Srivas Thakur fell down at the end of the class, all his disciples, Devanand Pandit's disciple, considered it as a big disturbance. और इस तरह कृष्ण के भाव में जब वह कथा के बीच में मूर्छित हो गए, तो देवानंद पंडित के सारे शिष्य काफी विचलित हो गए और देखने लगे क्या हो। And then they picked up Srivas Thakur because they didn't want to disturb the class. They picked up Srivas Thakur and threw him out of the entire building. क्योंकि वह डिस्टर्बेंस हो रहा था कथा में, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने केवल मूर्छित श्रीवास ठाकुर को उठाया और कक्षा के बाहर दूर जाके। And when Srivas Thakur fell down out of the kutir or building, he got up and he started dusting himself, and he went a little bit disturbed that he was treated like this. तो जब श्रीवास ठाकुर बाह्य चेतना में आए, तो उन्होंने देखा कैसे उन्हें कक्षा से बाहर कर दिया गया है। वह विचलित तो नहीं हुए, केवल उठे, परंतु मन में थोड़ा सा उन्हें कष्ट हुआ कि कैसे अब उन्हें भागवत सुनने का मौका नहीं मिल पाया। When Sri Chaitanya Mahaprabhu became devotee, so many people from Navadvip came to take shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu and got the mercy of Krishna. तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपना भक्त का स्वरूप उन्होंने प्रकाश किया, नाम संकीर्तन प्रारंभ किया, तो विश्व के हर जगह से, हर प्रांत से लोग नवद्वीप आने लगे उनके दर्शन। One day Sri Chaitanya Mahaprabhu was going through the same lane which has the house of Devanand Pandit. तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु उसी पथ से जाने लगे जिस गली में देवानंद पंडित का घर पड़ता। And Sri Chaitanya Mahaprabhu shouted at top of his voice that this rascal Devananda, though he is reciting all the slokas of Bhagavatam, I proclaim as a supreme personality of Godhead in his entire spectrum of his eternal life, he will never be able to attain devotion to Krishna, neither understand the any essence of Srimad Bhagavatam. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब देवानंद पंडित को देखा, तो इतने क्रुद्ध हो गए और उन्होंने यह घोषणा की कि यह जो अधम देवानंद है, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता समझता है, जो भागवत के सभी श्लोक उच्चारण करता है,
आज मैं ये सत्य बताता हूँ कि इसके हृदय में भगवान के प्रति कभी कोई भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, ना ही ये श्रीमद् भागवत का सार कभी समझ पाए। I will never even look at the lane which goes towards the house of Devanand Pandit. मैं कभी उस गली की ओर भी मुड़कर नहीं देखूंगा जो गली जाकर देवानंद पंडित के घर से निकली। To just even look at the lane of Devananda will contaminate everyone's existence. तो देवानंद पंडित के घर जाती हुई गली का भी अगर दर्शन मात्र मैं करता हूँ तो वो मुझे दूषित कर देगा। This is Devananda, who is the superstar Bhagavatam reciter at that time. तो ये है देवानंद पंडित की दशा जो उस काल के सर्वोपरि भागवत कथा का। When we offend devotees, those who are propagating the holy names of the Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu withdraws all his mercy from those devotees. अगर हम उन भक्तों का अपराध करते हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पण किया है भगवान के नामों की महिमाओं के प्रचार में, उनके अपराध से तुरंत स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु सारी भक्ति भावना हमारे हृदय से। Then you may chant Hare Krishna, but if you offend devotees, criticize them, your chanting will exactly be like a speaker mechanically uttering some mantras. तो अगर हम भक्तों का अपराध करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो हम भगवान का नाम तो ले सकते हैं, परंतु वह नाम उच्चारण इस तरह होगा जैसे कोई मशीन या कोई स्पीकर ऑटोमेटिक भगवान कुछ नाम कुछ ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। So Devanand Pandit was feeling very, very bad, but he could not do anything. Years later, one of Sri Chaitanya Mahaprabhu, very special associate, came to Navadvip. तो इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु को वृद्ध देखकर देवानंद पंडित को बहुत ही कष्ट हुआ, परंतु इस बारे में वह कुछ कार्य ना कर पाए। और कई सालों बाद ऐसा सौभाग्यवश हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त नवदीप पधारे। He was a great dancer. और वो एक बहुत ही सुंदर और परम नृत्य करता था। And when he used to dance, he used to dance and cry and shout, chanting Hare Krishna, so many people in Navadvip would come and just witness his devotion. तो जब ये भक्त नर्तन करते थे और जोर से हुंकार करते थे भगवान के नामों के संकीर्तन में, तो कई हजारों भक्त आकर इस दिव्य दृश्य को दर्शन करते थे। One day when he was dancing, so many devotees had circled around him, and he was feeling disturbed, and this Devanand Pandit, he cleared off all the devotees and assisted this devotee to dance nicely. तो एक दिन जब ये भक्त कीर्तन और नर्तन कर रहे थे, तो कई भक्तों ने इन्हें घेर लिया था इनके दर्शन के लिए, जिसके कारण यह अच्छे से भावपूर्वक नृत्य नहीं कर पा रहे थे। तब देवानंद पंडित ने कार्यभार संभाला कि वो लोगों को ठीक से खड़ा कर रहे थे, दूर कर रहे थे और सहायता कर रहे थे इस भक्त को भावपूर्वक भगवान के नामों का उच्चारण और नर्तन करने। After the dancing got over, Devanand Pandit brought him to his house and started massaging his legs because they would be thinking that they would be tired because of so much of dancing. तो जब इस तरह संकीर्तन समाप्त हुआ तो देवानंद पंडित इस परम वैष्णव को अपने घर में लेके आए और उनके पैरों को स्पर्श करने लगे, उन्हें दबाने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि इतना नृत्य करके जरूर वह थक गए। Just by the service, simple, selfless, menial service, immediately in the heart of Devanand Pandit, the devotion to chanting the holy names got awakened.
केवल मात्र इस तरह के साधारण नम्रता पूर्वक अहेतु की सेवा एक भक्त की करके देवानंद पंडित के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम What didn't come by remembering and memorizing the slokas of Bhagavatam? जो प्रेम उनके हृदय में इतने सालों से इतने हजारों हजारों श्लोकों और भागवत के उच्चारण से नहीं आया. What didn't came by speaking so much about Srimad Bhagavatam? जो चीज उनके हृदय में इतनी सारी कथाएं का व्याख्या करके नहीं आया. What didn't come by initiating so many students in teaching of Srimad Bhagavatam? जो चीज उन्हें इतने सारे शिष्यों को भागवत सिखाकर नहीं मिल पाया. Came by simply doing some menial service to this great devotee of Lord Chaitanya. वह चीज उन्हें प्राप्त हुई एक इतनी साधारण नम्रता पूर्वक एक सेवा एक वैष्णव के प्रति करना. So this is the fourth principle of glorifying, appreciating, assisting the devotees who have love for Krishna. तो ये है चौथा सिद्धांत कि जिसमें हम भगवान के भक्तों का गुणगान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जो कि भगवान के नामों का प्रचार करते हैं. In this way, if you really want to give this gift of chanting the holy names to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu with devotion, with attention, we need to follow these simple steps and remind ourselves of these steps every day in the morning. इस तरह अगर हम श्री चैतन्य महाप्रभु को ये उपहार देना चाहते हैं कि भगवान का हरिनाम भक्ति पूर्वक ध्यान पूर्वक लेकर वो उपहार देना चाहते हैं, तो हमें ये चार सिद्धांत हमेशा स्मरण करने चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए कि हम ये सिद्धांत जीवन में पालन कर पाए. I would all of you ask, what are these four principles? Anyone would like to raise hand? Then Bhishma Prabhu will give you permission to speak. The first principle. चार सिद्धांत मैंने आज व्याख्या की. मैं चाहता हूँ कि भक्त एक एक करके इन सिद्धांतों की को बताएं जो चाहते हैं. The first principle. पहला सिद्धांत कौन बताएं? Yes, please raise the hand. Oh, you forgot the principle. Please raise the hand. First principle. Okay, Santanu Prabhu will not be given the opportunity. Okay. Udharan Krishna Prabhu, yes. The first principle. The first principle is that no ordinary person can chant the holy name of Lord. We have earned that qualification from our Guru or from the service we have done in our past life. Okay, and then what else? That's great. And then, so first, can you talk about other steps also? No. Just the first step is incomplete. What is the complete one? We have to offer prayers to Sri Krishna Chaitanya. Guru Panchatattva for giving us this opportunity to chant Hare Krishna. And help each other to chant together and remember to chant Hare Krishna. Okay. Still it is incomplete. To anyone else would like to little bit. One word is missing which was important. Yes, Sam Narayan. Yes, yeah. Now, Shyam Narayan, please speak. Yeah. Hare Krishna Prabhu. Prabhu, before starting our chanting, we can give 2 minutes and we can pray to Lord Chaitanya and all the devotees. Okay. That they bless us and we should be fortunate. We should feel fortunate enough that we are able to do this chanting. Fortune. The first principle is understanding our great fortune
that how I am unqualified and how by the mercy of Guru I have been qualified to chant Hare Krishna. Yes, okay. The second one, very good, very good. Second one, please raise hands, please raise hands. Yes, the second one. Yes, Jyoti Kohli, Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दूसरा सिद्धांत आपने बताया कि हम अपने को बार बार याद दिलाना चाहिए कि भगवान का नाम लेने का उपहार हमें प्राप्त हुआ है। और ओके, ये तो पहला हमारा सिद्धांत जो टू इंक्रीज आवर कनेक्शन विद कृष्णा, वी हैव टू लिसन अटेंटिवली अबाउट कृष्णा। Okay, the second principle is to hear about Krishna regularly. And when we hear, then that enhances the quality of our kirtanam. Yeah, second principle is Shravanam. To spend some time, 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes to hear from Guru about Krishna. Yes, that's the second principle. Yes, what's the third one? Yes, Bihari Govind Prabhu. Krishna Guruji Dhandavat. The third one is chanting with devotees who have developed that taste and who are chanting eagerly, attentively, and sincerely. Yeah, so that is the third principle, to really associate with those devotees and chant with devotees who are having that love or who are struggling to aspiring to have that love. Very good, very good. And the fourth one, yes, Sarita Mataji is raising hand. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। फोर्थ में बताया था प्रभु जी कि हम उन भक्तों की सेवा करें और गुणगान करें जिन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित किया है। Yes, the fourth one is to serve, love, appreciate, glorify those devotees who are engaged in glorifying the holy name. And just by serving them, assisting them, we also develop taste for the holy name. Hare Krishna. So it's my request that all of you really consider this suggestion from my side, that if you really don't want to get cheated, please really prioritize sincerely chanting Hare Krishna. तो मेरा ये विनम्र निवेदन है सभी भक्तों के प्रति कि ये मेरा सुझाव है आपके लिए कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके साथ धोखा हो इस जीवन में अंत में, तो आप जीवन में प्राथमिकता दें भगवान के नामों को हृदयपूर्वक उच्चारण करें। Material energy knows that if you chant Hare Krishna nicely, you cannot remain under her control. भगवान की भौतिक शक्ति, माया शक्ति ये भली भांति जानती है कि अगर आप किसी तरह भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं ध्यान पूर्वक, तो आप उनके बंधन से मुक्त हो। And that is how material energy, in order to just test your devotion, will offer you so many allurements, especially during chanting. तो इसी सिद्धांत को समझते हुए भौतिक प्रकृति जो है, भौतिक शक्ति जो है, आपकी परीक्षा लेने के लिए आपकी भक्ति की, आपकी दृढ़ता की माला के समय ही, जप के समय आपको अलग अलग विविध तरह के उपचार देंगे ताकि आपका ध्यान जो है, मन जो है, भगवान के नामों से हटाया जा सके। I sincerely pray for each one of you that each one of you consider this as an important principle in your life, to really sincerely chant the holy names with devotion and attention. तो मैं हृदयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ आप सभी भक्तों के लिए कि आप सब जीवन में इस भगवान के नामों के उच्चारण को प्राथमिकता दे पाए। In the last, I have one announcement which is pending last 15 days. Please hear this attentively. तो अंत में एक सूचना मुझे देनी थी
जो पिछले 15 दिनों से आप सबको बताना चाहूँगा। His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj and His Grace Dayaram Prabhu, both of them had actually instructed all of us, all the devotees in ISKCON all over the world, to pray for one of the case that we are having in ISKCON, to really sincerely pray and chant the Narsimha mantra. तो परम पूज्य जयपताका महाराज और दयाराम प्रभु ने व्यक्तिगत रूप से सभी ISKCON के भक्तों से प्रार्थना की कि वह नरसिंह देव से प्रार्थना करें एक केस के लिए जो ISKCON इसमें भी चल रहा है। So, and all the GBCs and all the senior devotees have requested all of us to just spend 10 minutes in a day to chant this Ugram Viram Mahavishnu Jwalantam Sarvato Mukham Narsimham Bhishanam Bhadram Mrityur Mrityu Namamyaham. This mantra for 108 times. तो सभी GBC में ISKCON के वरिष्ठ आचार्य वर्गों ने ये प्रार्थना की है सभी भक्तों से कि वह 10 मिनट प्रतिदिन ये उग्रम वीरम मंत्र जो है नरसिम्हा मंत्र है इसका 108 बार उच्चारण करें। Honestly speaking, when I had gone to Chennai, I had chanted one time, and after that, I have also not been able to chant, being involved in so many other things. तो सत्य तो यह है कि मैं भी स्वयं इतना व्यस्त था कि जब मैं चेन्नई गया था तो एक बार मैं इन प्रार्थनाओं को जप कर पाया था, परंतु मेरा व्यस्त कार्यकलापों की वजह से मुझे समय नहीं मिल पाया। So I thought that by announcing to all of you, I'll be able to follow His Holiness Jayapataka Swami Maharaj's instruction. And I hope that all of you also would take out time to chant this mantra 108 times every day. मेरा ये विचार था कि अगर मैं आप सभी को भी कहूँ तो मैं भी ये अच्छी पालन कर पाऊंगा। Where are the mantra cards? No, what is the mantra card? That card. Okay, there are some cards. Okay, there are some cards. They are there. If those who are offline, we can give those cards to you so that you can take, or you can keep your own reminders every day to chant one round of this mantra. But I have been thinking to announce, and it was becoming delayed, and I forgot, and somehow today I remembered it. So it's my request. We will put in all the official groups the mantra which you have to chant, and pray to Narsimha Dev that our society is really getting the protection and security of Lord, and really goes out and serves Lord Chaitanya Mahaprabhu nicely. So we will. तो ये जो मंत्र है हम सभी WhatsApp ग्रुप में डाल देंगे और हम सभी प्रार्थना कर सकते हैं नरसिंह देव से कि जो हमारा देव भक्तों का समाज है ISKCON इसको वह सुरक्षित रखें ताकि हम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का निरंतर प्रचार कर सकें। So we can chant this using our japamala. We can chant this using our hand, but best is japamala. When you are chanting, after your chanting of 16 rounds is over, one round you chant this. And please remind me also. I am telling all of you so that I get reminded, because I have promised. Dharam Prabhu came personally to our meeting and said, at least you, all the temple council members should chant. I said, yes, I will chant, but I am not chanting. I am a fallen soul. So by reminding to all of you, I will chant. So please bless me that I chant every day and follow the instruction of Gurudev in my life. And all of you also do it in your life. It takes hardly 10 minutes to chant the mantra 108 times. मेरी प्रार्थना है कि आप सब भी गुरु महाराज की इच्छा को पूर्ति करें
और नरसिंह मंत्र का जप करें। मुश्किल से 10 मिनट लगता है, अगर आप करेंगे तो मुझे भी प्रेरणा मिलेगी, मैं भी नियमानुसार इसे जप कर सकता। I have been given one card by which is being circulated by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, and that card is with me. I don't know where it is. I have got 50 of them. Those who want, I can give them, and we will, for the online devotees, we will take a screenshot of it and put it in the group so that you know the mantra what you are supposed to chant. I think it's very simple, Ugram Viram mantra. So please really remind me, and you. I am also reminding all of you to do this. At least you have to do this for 90 days, 3 months. तो हमारे पास ये कार्ड्स हैं, हार्ड कॉपी कार्ड्स हैं, जो कलकत्ता में हमसे आके ले सकते हैं, और बाकियों के लिए हम इसका फोटो जो है ग्रुप में दे देंगे। और एटलीस्ट 90 दिनों के लिए हर दिन 10 मिनट निकाल कर नियम अनुसार मैं निवेदन करता हूँ कि हर भक्त नरसिंह देव की प्रार्थना करें। I would also, we will also put one devotee's name who can keep track of how many mantras who are chanting, and that record I have to send to His Holiness Jayapataka Swami Maharaj and Dayaram Prabhu. Hare Krishna. तो एक भक्त को हम मूल्यांकन करेंगे, जो रिकॉर्ड रख सकते हैं कौन भक्त कितने बार जंप कर पा रहे हैं, और उसका फाइनल रिकॉर्ड जो है हमें अवसर मिलेगा और हम पूज्य जयपताका महाराज को भेजने का। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Gauranga Mahaprabhu ki, Shri Harinam Prabhu ki, Shri Gaur Purnima Maha Mahotsav ki, Nitai Gaur Premanande. Vancha kalpataru vasya kripa sindhu evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Vaishnav Thakur ki jai. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna.